Here's a quick look at the top images from Nandigram on what has been an extremely aggressive last day of campaigning in the constituency. It began with Amit Shah taking out a big road show for the BJP's candidate, Suvendu Adhikari, surrounded by thousands of people. These were the images today from Amit Shah's Rath Yatra in battleground Nandigram. Actor Mithun Chakravarti, who recently joined the BJP, also campaigned in Nandigram. In fact, just minutes ago, these were the images from the constituency, flanked by the candidate Suvendu Adhikari as well as top BJP leaders. He was right there campaigning. The Cobra, who's just been attacked by Mamata, was all out in Nandigram. Well, Mamata, on the other hand, has continued campaigning in her wheelchair. These were images of a big Padyatra with her in a wheelchair as she approached a series of public meetings through today where she's launched big attacks on the BJP and its leaders. Well, months of this most high-profile campaign for the Nandigram seat is finally over. In this last-ditch effort, Mamata and Amit Shah, in support of Suvendu, held roadshows, hitting out at each other, unsparing words being used. Nandigram, the seat, is a make or break for Mamata Banerjee, and it's the big entry point possibly for the BJP. It goes to the polls on April the 1st. The Mamata Suvendu poll blockbuster. It's Nandigram or nothing. On the last day of the prestige campaign, BJP and TMC went all out. Furious Mamata attacked the BJP. এত ভয় নন্দীগ্রামের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছ গুন্ডা দিয়ে লজ্জা করে না শরম থাকা দরকার Shah was confident of massive victory. बिल्कुल 200 पार होंगे 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार में High voltage campaign in sweltering heat with political temperatures soaring even higher. Home Minister Amit Shah and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee locked horns in Nandigram ahead of the April 1 vote. With show-of-strength rallies, the last-minute campaigning saw Amit Shah hugging Suvendu Adhikari ahead of the massive roadshow and vowing to end Mamata's rule amid Jai Shri Ram chants. निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है. Mamata too was at her fiery best, holding a 3-kilometer roadshow in a wheelchair. Mamata said that Nandigram is her own place. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না নন্দীগ্রাম আমার জায়গা আমার মাটি আমি থাকবো মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন খেলা হবে ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है उसके दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया इलाज चाहिए दिमाग जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं क्रिमिनल्स ला रहे हैं पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से झूठा बात बोलना उसकी आदत है ये नया बात नहीं. Launching scathing attack at the BJP, Mamata also claimed that BJP goons are roaming in Nandigram and in Bengal, a claim countered by Shah himself. চারিপাশ থেকে যেখানে যাচ্ছে মানুষের চোখে জল কাজ্জার বলছে মা লড়ে যাব ভোট দেবো কিন্তু এই গুন্ডাদের কিন্তু শাস্তি দিতে হবে শায়েস্তা করতে হবে আমি এত বড় যে এখানে গুন্ডা আছে কয়েকজন রাজনীতির লোকেরা যে এত বড় নটোরিয়াস হতে পারে আমি ভাবতে পারি না बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है क्रिमिनल्स लेके आ रही है क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले प्रशासन उनके हाथ में कौन रोक रहा है. Could Nandigram lead the way to Nobanno
as the BJP and the TMC put their best foot forward on the final day of campaigning. It has turned into a Nandigram or nothing contest, a battle of prestige with much at stake. With Indrajit Kundu in Nandigram, Polami Saha for India Today. India Today's Shweta Singh also spoke to Home Minister Amit Shah as he campaigned in this final stretch in Bengal. Listen in. 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कल ममता बनर्जी ने बहुत सारे टीवी एक्टर लाए, स्टार स्टडीड कैंपेन था कल उनका। कैसे काउंटर कर रहे हैं आप स्टार स्टडीड कैंपेन को? हम किसी को काउंटर नहीं करते, हम अपना करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस भव्यता से, जो आप भव्यता देख रहे हैं रोड? ये जो है, ये निशानियां हैं, शुभेंदु के जीतने की निशानी जारी सामने। The days leading up to the Battle of Nandigram have been high on political punchlines, rallies and posturing. Today was a reminder of how it has been a climax of everything that came before it. Here's a look at the highlights of this fiery campaign between Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari. Once a formidable team in Nandigram, fighting in the bastion of the left, Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari are now fighting the toughest battle of their political lives against each other. This fiercest battle culminates on April the 1st when Nandigram holds. But the battleground has been raging hot for weeks. With stakes high, Mamata Banerjee upped the ante, brandishing her Hindu credentials. Durga, Bijo Binashini, Sarbo Sharti, Rike Devi, From reciting the Durga and Shiv part to her temple run, Didi and Suvendu matched each other, temple for temple, rally for rally. पहले टीम्स को हराना और एक अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना, ये मेरा पहली एजेंडा है। With both the candidates camping in Nandigram came a dramatic twist. Mamata Banerjee injured her foot on the campaign trail. Didi, apar paa phule royeche. Didi, paa phule royeche. Amar jete dao, amar khub jete. Acha, didi hospitale jacchen to? Aaj Kolkataয়. Amar doctor dekhechi. Accusations flew thick and fast. While the Trinamool cried vendetta, the BJP termed it drama. अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है।
Mamata in a wheelchair and her foot in a cast vowed not to give up. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না নন্দীগ্রাম আমার জায়গা আমার মাটি আমি থাকবো মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন যাতে বিজেপিকে কমর দিন রাজনৈতিকভাবে কমর দিন আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বোল্ড আউট করে দিন Suvendu too declared that no one can stop him. ये जीत शुभेंदु का नहीं है, ये बंगाल की जनता जो असली परिवर्तन के लिए उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, उसकी जीत। The countdown to the clash of the titans has begun. Who will win? Bengal ki beti or Nandigram ka beta? Bureau report, India Today. And getting you some breaking images from the battlefield of Nandigram. Mamata Banerjee, who's been consigned for the last couple of weeks to her wheelchair, has just stood up for the national anthem. That's with her fractured leg in Nandigram just a short while ago. India Today's Indrajit was there. He sent us this report. As Mamata Banerjee brought the curtains down on a high-octane campaign in Nandigram, at the penultimate moment, Mamata Banerjee on the dais lent her voice to the national anthem, which was sung by her party men. And while she did that, she stood up from a wheelchair. Her party supporters, of course, advised her not to do that because her injury is still bad. But Mamata Banerjee insisted that she will stand and sing the national anthem. So she did that just a short while back here in Nandigram, and with that she has brought down the curtains on a very high-octane campaign that she conducted over the past 3 days in Nandigram. She has been campaigning in Nandigram. She has done padayatras, sitting on her wheelchair across kilometers in Nandigram. Now I want to tell you about why Nandigram is so important beyond the obvious. This is beyond the obvious of it being a prestige battle, etc., etc. That you obviously know. You've been following this election. Let me tell you specifically why it is so important. For Mamata, for instance, her rise to power began with Nandigram. The agitation, against the left happened from this particular place as far as the land acquisition movement was concerned. And this stir here helped Mamata's pro-farmer image. Very strong connect with the region's natives already as a result of that. Now, Suvendu Adhikari, who was earlier Mamata's colleague and confidant and her aide in the Trinamool, has become the most controversial turncoat who jumped to the BJP. He also has a good connect because this was his stronghold seat, which he won in 2016 with 67% of the vote. He reportedly scripted the Nandigram land battle for Didi, so he knows exactly why it is such an advantage for Mamata Banerjee. He rose to the limelight after that entire Nandigram campaign a decade ago. So that's the reason why this has become such a tantalizing battle between both of these leaders. As one of the last unshakable bastions of the left fell, Mamata Banerjee's political career rose from this land of Nandigram. Now she faces one of the toughest poll battles of her life and her career in Nandigram once again. Politics and her career have come full circle for Mamata Banerjee. A little more than a decade ago, it was the police firing at Nandigram that shook the foundations and weakened the hitherto unshakable left-front citadel that was West Bengal. In 2011, what happened in Nandigram was critical to the outcome of the assembly elections of the state. It was Mamata Banerjee's unflinching support for the people of Nandigram as they resisted land acquisition for a chemical hub that won her votes all across the state. And it is here in Nandigram where Mamata Banerjee has now announced that she will battle the BJP in her pursuit of a third consecutive term in office. With this announcement on 18th of January, she has thrown the gauntlet at her current bête noire, Suvendu Adhikari. Adhikari, a senior minister in Mamata's cabinet, ditched the TMC in December 2020 to officially join the BJP.
Mamta's direct face-off with Adhikari on his home turf will decide which party dominates the narrative of Nandigram. A narrative that can have far-reaching impact beyond the limitations of its immediate surroundings. अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो हमारा परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन का टाइम में हमरा बोला था नौकरी मिल जाएगा, इधर में इंडस्ट्री भी होगा, टूरिज्म शिल्प भी होगा, बहुत आदमी काम करेगा, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, कोई भी नहीं हुआ। जो हमारा इधर रास्ता बना दिया, वो पहले हमारा लाल मिट्टी का रास्ता था, तो ये लोग सरकार में आने के बाद अभी ढलाई हो गया, कुछ कंक्रीट का बन गया और पिच रोड हो गया। लेकिन रोड के अलावा मैं सुनना चाहती हूँ और क्या क्या बना है यहाँ पे? स्कूल है? स्कूल पहले भी था, अभी भी है, तो वो 10वीं क्लास तक था, अभी HS तक हुआ है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गरीबी कितनी मिट्टी है यहाँ पे लास्ट 10 साल में? ज्यादा नहीं मिट्टी है, क्योंकि इधर वो एक फसली चाष होता है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से 2-3 फसली या चाष नहीं होता है। नौकरियाँ कितनी मिलती हैं? इधर ज्यादातर लोग बाहर में रहते हैं, क्योंकि गुजरात में या केरला में नहीं, नौकरियाँ जीरो। Purnima's husband was one of the villagers who died during the movement of 2007 that killed 13 others on the same day. সরকারি কর্মসংস্থান দেবে বলে দিদি ঘোষণা করেছিল যে আমি ওই নন্দীগ্রামের উপর থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি, তার জন্য ওই 42 জন একে কর্মসংস্থান দেবে বলে কথা বলেছিল। কিন্তু যাদেরকে কর্মসংস্থান দিয়েছে, একটা আইসি দিয়েছে রান্না 4 থেকে 5,000 টাকা বেতন, ওই বেতন নিয়ে একটা সংসার চালাও যায় না। ওই টাকা নিয়ে কি হবে? কি হাফ পরিবার আছে যারা এখনো কাজ পায়নি। দিদি এখনো তাহলে আমাদের কথা রাখলো না। বর্তমান প্রথম থেকে 2007 থেকে দাদা আমাদের টুকটাক হলেও পাশে আছে, আর এখন পর্যন্ত আছে। শুভেন্দু দা? হ্যাঁ, দাদা যখন বিজেপিতে চলে যায়, তখন দিদি যখন জানতে পারলো দাদা বিজেপিতে তাও এখনো পর্যন্ত দিদি আমাদের কোনো জমা খরচ নেয়নি। শহীদ পরিবাররা কি করছে, কেমন আছে, দিদি এখনো পর্যন্ত দেখেনি। শুভেন্দু অধিকারী যে ফ্রেশটা ছিল আগে। 74-year-old Abdul Dayal Khan and Asha Bibi lost their 15-year-old son to police firing in 2007. They questioned the political integrity of those who had led them then. শুভেন্দু বাবু হোক, আরও যে কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা আন্দোলনকারীর মধ্যে, তারা যে আন্দোলনটা করছিল মহামাটি মানুষের রক্ষার জন্য, এখন বর্তমান শুভেন্দুবাবু কোথায় গেছে? সে আদর্শচ্যুত হয়ে আমাদের দলের সঙ্গে বেইমানি করে অন্য দলের সে ক্যান্ডিডেট হয়েছে। তখন তার স্লোগান ছিল কি? আজকের স্লোগানটা তার কি? আজকের স্লোগান তখন দলের ভিতরে ঠাকুর দেবদা কিংবা একে নিয়ে এসে শাউটিংয়ে পরিণত করেছে, যেটা জয় শ্রীরাম তার ধর্মীয় একটা হতে পারে, কিন্তু রাজনীতিতে ধর্ম টেনে নিয়ে এসে জয় শ্রীরাম সকলকে বলাতে হবে, তার জন্য আমরা শুভেন্দু অধিকারীর সাথী হব, এমন তো কথা না। খেয়াল রাখতে পারবে মমতা ব্যানার্জি। শুভেন্দু অধিকারী তো জিতছে এখানে এতদিন দিয়ে। না, শুভেন্দু অধিকারী আর কোনো খেয়াল রাখবে না। শুভেন্দু অধিকারীকে আমার ওরা ও আর করিনি। The issue of land had always been emotive in the politics of West Bengal. Land was the issue around which the left front, headed by the CPM, mobilized rural voters and won 7 consecutive elections. The 2007 land agitation in Nandigram was the breakthrough that Mamata Banerjee and her party, the Trinamool Congress, had been waiting for to deliver a final blow to dislodge the left in West Bengal. And now the BJP is using Nandigram and turncoat TMC leader from there, Suvendu Adhikari, to try and weaken the legacy that Mamata is trying to rekindle. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.